Hello friends, welcome everyone. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର important session ରେ welcome to exploring goals. Welcome to our YouTube channel easy. Clear ଅଛି voice audio video ସବୁ ଠିକ ଅଛି? ହଁ ଯଦି yes ଅଛି କଣ ଆଉ yes ହିଁ ଲେଖିବ। ଚलो ଫଟାଫଟ and ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଅଛ YouTube channel exploring goals ରେ ହଁ ଜଏନ୍ କରିବ, subscribe କରିବ, bell icon hit କରିବ so that ସବୁ live ଆଉ uploaded videos ର notification ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ ହବନି। Subscribe, like, share, comment କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। and ଆମର easy application exploring goals आप रे যদি join करना ताले definitely join कर जाओ for better preparation and complete guidance and complete preparation coverage of syllabus e-books pdf practice mock test maximum mcq ये सब जिनस ता सहित live and recorded classes doubt clearing sessions कौन कोर्स अच्छे तारो डिटेल्स DELED B.Ed entrance 2024 ये होची तारो कोर्स duration is 6 months combo subscription the most demanding for all teacher eligibility test and teaching exams 399 6 months पर्यंत complete guidance and definitely crack करि परिबो सब teacher eligibility test आउ जे कोनोसी teaching exams ପାଇଁ prepare करथले सेमिति एजुकेशन को नेकी कैरियर बनार अछि प्रोफेशन एजुकेशन ग्राउंड रे रहिवार अछि बैकग्राउंड रे तो ये होछि तमरो most demanding course for Odisha Education Service, MA in Education, PGT Education, NET Education, Teacher Educator and AMET. Foundation for all competitive examination, OPSC रो, OSSC रो, OSSET रो, जे कौन से एग्जाम में प्रिपेयर करछो ये हेल्प करिवो RI अमीन ता सहित सुपरवाइजर जहां भी पोस्ट अछि ओ SSC रो आगो को तापे मध्यम क्लासेस मिल परिवो बांसना और तो ना केते हां नसिगला सब 121 नंबर प्रश्न स्क्रीन रे आस जाइछि तमनकर रेस्पॉन्स रो अपेक्षा रे teachers who are working towards inclusive classrooms create curriculum adaptations incorporate diverse perspectives examine their own implicit bias and see diversity as an obstacle do not copy paste Sujit संस्कृत पिला फर्स्ट जिनस ये संस्कृत पिला से बीएड कहीं हिंदी रे कला हला संस्कृत बीएड हाँ सॉरी संस्कृत बीएड पिला से हिंदी टीचर रे कहीं अप्लाई कला और सिलेक्ट हेई ना कौन हो गला कहीं एते माने सब बेले तुम मान को गाली सुनिबार मौका दरकार व्हाई यू आर माने कहीं गोटे लाइन तुमको कहीं भल लागुनी हाँ एटा कर देबी सेटा कर देबी आरटा कर देबी जोटा हेले गोटे पकाई देबी व्हाई गोटे ही नेगेटिव अछि सी डाइवर्सिटी एज ऑब्स्टैकल्स डाइवर्सिटी को ऑब्स्टैकल हिसाब रे देखिबानी डाइवर्सिटी केबे भी ऑब्स्टैकल्स नो एनरिच्ड एनवायरनमेंट कर दिया एनवायरनमेंट को एनरिच कर दिया डाइवर्सिटी इज गिफ्ट फॉर इंडिया इंडिया रे सबटु अधिक डाइवर्सिटी देखा जाए कल्चर रे सोसाइटी रे रिलीजन रे थिंकिंग रे सब प्रकार डाइवर्सिटी आउ डाइवर्सिटी केबे भी ऑब्स्टैकल्स नो ये पॉजिटिव वे रे हमको स्टिमुलेट करे ग्रेटर अचीवमेंट ग्रेटर एक्सपीरियंस पाई तो एटा को छाड़ी दियो माने आईवी जोटी नाही सेटा ही अब आंसर सो बी इज राइट आंसर वेरी गुड स्टार्टिंग बहुत बढ़िया what is the main goal of assessment for learning yes assessment for learning रो main goal कौन लक्ष्य कौन देखो जिते भी असेसमेंट फॉर लर्निंग आसुची एटा कोन फॉर्मेटिव तो
तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन दिए सब बड़े फीडबैक दिए provide feedback to students that can be used to improve their learning कहीं कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू ए स्टैंडर्ड और बेंचमार्क कंपेयर करिवार तो नहीं इवैल्यूएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स असाइन करिवाटा समेटिव रो फॉर्मेटिव रो नो और समेटिव टा होची असेसमेंट हां ऑफ लर्निंग to identify students who can be categorized as slow learners the slow learner gifted learner average learner करिवा ପାଇଁ फॉर्मेटिव तयारी नो फॉर्मेटिव फीडबैक दिए फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स एट स्टूडेंट्स ऑप्शन रे अछि टू इंप्रूव देयर लर्निंग टीचर को भी फीडबैक दिए टू इंप्रूव द टीचिंग क्वालिटी एंड पेडागोजिकल स्किल्स so here right answer is C experiential learning stresses on experiential learning कहा को इंपोर्टेंस दिए 123 एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहले कोन बुझुछ एक्सपीरियंस रू लर्न करिवा एक्सपीरियंस कोठु मिले किछि कले हां किछि कले किछि देखिले किछि ऑब्जर्व कले जे कोनसी वे रे एक्सपीरियंस आसी जाय आ एक्सपीरियंस टा लर्निंग टा सेते बेले सक्सेसफुल हैला जहां एक्सपीरियंस करिचो जहां अनुभूति अछि जहां नुआ सिखिचो ताकू अप्लाई करिबो जेतेबेले पर्यंत अप्लाई न करिचो से एक्सपीरियंस रो किछि लाभ अछि कि आई एम एक्सपीरियंस्ड अरे बाप रे केते वर्ष ना 10 12 15 इयर्स रो एक्सपीरियंस के 50 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी कहूची बट जेतेबेले पर्यंत एक्सपीरियंस रो वैल्यू टा रिफ्लेक्ट न होईची सेतेबेले पर्यंत कोन लाभ अछि से एक्सपीरियंस the experiential learning stresses on importance of critical reflection is most important तो माने सब एपट सपोर्ट हे गला ठीके बट यस जेतेबेले पर्यंत अप्लाई न करचे से एक्सपीरियंस रो किछि माने नाही एबे मु कहिबे मोर पढेबार एक्सपीरियंस जदि एग्जैक्टली देखिबा को जीवो ताहले पाखापाखि 12 वर्षर एक्सपीरियंस 12 मास रु किछि मास एपट सपोर्ट हे पारे किंतु 12 वर्ष 12 इयर्स रो एक्सपीरियंस अछि टीचिंग रे बट टीचिंग माने नुह जे मु केवल एई पिलांको ही पढिछि विभिन्न प्रकार रो पिलांको विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई विभिन्न स्तर रो पिलांको पढिछि सो से टीचिंग टा केते बेले रिफ्लेक्ट होबो जेते बेले ए जो 12 वर्षर एक्सपीरियंस विभिन्न पिलांको डाइवर्सिटी को फेस करिछि सो ए जो डाइवर्सिफाइड स्टूडेंट्स माननको केमति अप्लाई कली तांकर बेटर अचीवमेंट पई सेटा इंपोर्टेंट तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन which of the following is an effective method to enhance problem solving skills in children कौन पॉइंट डी नो learning as a product rather than a process learning is a product experiential learning टा ଗୋଟେ product की learning टा प्रोसेस टा तमे केमति एटा केमति करलो एबे उल्टा हे वाला क्वेश्चन मोर तमे कोन मते पढछो मु तमु करछि लर्निंग एज ए प्रोडक्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग होछि प्रोडक्ट अरे लर्निंग इज ऑलवेज ए प्रोसेस लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस पर effective method to enhance problem solving skills in children कोन कलो एटा अच्छा इफेक्टिव मेथड टू एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग डिस्करेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग को डिस्करेज करबा एति की पढला पर हमर पढिबार इच्छा नै काटि देली एनकरेजिंग देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एनकरेज करबा
टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रोब्लेम अच्छे करिया दरकार नहीं छाड़ी दे प्रोवाइडिंग देम विथ रेडीमेड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स कौन है एगुड़ा हाँ प्रोडक्ट भी है पारिबो कज हमर जो मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर होची सेटा तो प्रोडक्ट ना देखो लर्निंग रु प्रोडक्ट बाहरी बनी बोली मु कहूनी किंतु लर्निंग एज ए प्रोडक्ट नो लर्निंग इज ऑलवेज ए प्रोसेस हाँ लर्निंग इज ऑलवेज ए प्रोसेस किंतु से प्रोसेस रु प्रोडक्ट बाहरी पारे किंतु लर्निंग टा प्रोडक्ट नुह लर्निंग टा गोटे प्रोसेस जो प्रोसेस रे आमे जदि लर्न करी चलीबा इट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस करी चलीबा ताले किछि ना किछि मॉडिफिकेशन आसीबो किछि ना किछि चेंजेस आसीबो त माने न जे लर्निंग टा डायरेक्ट हे जिवो कोन एटा बुझी गला तो giving them opportunity to brainstorm and make intuitive guesses is the right answer प्रोडक्ट को आउटकम कहि परिबा यस जोटा कि आउटकम लर्निंग रो आउटकम लर्निंग इज ए प्रोसेस and we get something out of learning that is the product or the outcome read the following statements and choose the correct option 1 to 5 teachers should create a meaningful environment with 6 active participation and engagement of all children बढ़िया कथा all children are intrinsically motivated to learn and are capable of learning वाह कौन कहिला so yes a is true or is the correct explanation of a that is the right answer which is present in option b so b is correct. Yes, teachers should create meaningful environment with 6 active participation and engagement. ठीक अछि. All children are intrinsically motivated to learn and are capable of learning. एटा को false काहे कहउछ काहे कि छुआ को एमती हां R is not false. एठी R is also true. Intrinsically motivated समस्त थांती आउ केते बेले थांती सेति द रीजन आउ असेसमेंट कला assertion कला assertion reason करिया reason हला intrinsically motivated थिले meaningful learning environment रो फायदा उठेबे आ active engagement होबो participation होबो तो टिके कनेक्ट कर दिया हले जे बुझिबो नले असुविधा हि जिवो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोली कहबा गट all children are intrinsically motivated to learn काहे की कहला एठी आ काहे की हला कहलो काहे की टीचर क्रिएट करछन्ती meaningful environment टीचर सिक करछन्ती active participation and engagement जेतोले टीचर एते बढ़िया एनवायरनमेंट एते बढ़िया सेतोले इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड ऑटोमेटिक हेबे तो कनेक्टेड अछि दीटा जाक केवल एटा को इंडिपेंडेंटली धरनी या सहित कनेक्ट करके धर assertion reason टाइप क्वेश्चन रे कनेक्टेड था कौन देखो इंट्रिंसिकली सब मोटिवेटेड थांतिनी से अलगा कथा बट मीनिंगफुल एनवायरनमेंट अछि टीचर्स आर एक्टिव अछंती पार्टिसिपेशन होउची एंगेजमेंट होउची हां which of the following process does not contribute to the course of learning ना गोटे गोटे क्वेश्चन तो बुझी परनो मु बुझौछि जे तळे तापर भी बुझी परनो मु जतळे रडी से कहि जाट जंती होनी कहला लको हां कहछ ना कोन जबरदस्ती किछि नहीं yes exactly assertion और रीजन को कनेक्ट करले ऑल माने दीटा जाक ट्रू हबो एंड भी किंतु रियलिटी रे फॉल्स बढ़िया स्वागत कर does not contribute decontextualization टा कंट्रीब्यूट करेनी कंटेक्स्ट रो बाहर को जीवाटा कंटेक्स्ट सहित कनेक्ट रहिबो किंतु डिफरेंटली डाइवर्जेंटली एनालिसिस करा असुविधा नहीं किंतु कंटेक्स्ट रो बाहर को पळैले असुविधा
ओके डज नॉट कंट्रीब्यूट टू कोर्स ऑफ लर्निंग को डिकंटेक्चुअलाइजेशन माने देखो कंटेक्चुअलाइजेशन अलगा कंटेक्स्ट अलगा और बुक अलगा आमे बियॉन्ड बुक बोली कहूचे बियॉन्ड बुक जीवा डाइवर्जेंट थिंकिंग वेराइटीज ऑफ जिनस को फॉलो करिवा बुकिश नॉलेज रो बाहर को भी जीवा एनालिसिस भी करिवा बट कंटेक्स्ट भीतर रही की करिवार अछि कंटेक्स्ट रो बाहर को जीवा बुझी पारलो contextual or decontextualization which of the following is an example of a question that requires students to reflect on their own thinking approach on categorization करो हाँ सुस्मिता तो कंफ्यूजन एबे काहे कि सब दूर रही जो बोली भाबुछ रहू कंफ्यूजन किंतु सब दिन पाई न रहू आज ही क्लियर हो एबे होय तो क्लियर न होई पारे example of a question that requires students to reflect on their own thinking how has your thinking about the use of verbs changed since the beginning of the class ସେଇଟା କହୁଛ ଆଚ୍ଛା what is the relationship between nouns and verbs in a sentence ତ ଏଠି କହିଛି କୋଉଟା डाइवर्जेंट थिंकिंग आणुଛି डाइवर्जेंट थिंकिंग को बाध्य କରୁଛି नाउन एंड वर्ब ଭିତରେ ଫରକଟା କିଛି ଆସୁନି ଡେଫିନେସନ ଅଫ वर्ब ରେ କିଛି ଆସୁନି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ मेमोरी बेस्ड हाउ डू यू चेंज वर्ब टू प्रेजेंट टेंस ଏଥିରେ ବି କିଛି ନାହିଁ बट हाउ हैज योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब्स चेंज्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास कहला बेलକୁ वर्ब ର यूज ଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ତମର ନିଜର ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କର ଏଠି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାଉନ୍ ବର୍ବ ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ବା ରିଲେସନ କ'ଣ କି ବର୍ବର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ପଚରା ଯାଉନି ଯୋଉଟା କି ମେମୋରି ବେସ୍ଡ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ତମର ଭାବନା ତମର ଚିନ୍ତନ ତମର थॉट्स କେମିତି ଅଛି ୟା ଉପରେ ସୋ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ आंसर यू ऑल आर करेक्ट जो माने डी सहित थे ओपन एंडेड एग्जैक्टली हां ए प्रीवियस क्वेश्चन रे देला कैटेगराइजेशन कोन कहतला कोर्स ऑफ लर्निंग रे कैटेगराइजेशन माने कोन कैटेगराइजेशन रो किछि कंट्रीब्यूशन अछि ना नाही एठी कैटेगराइजेशन माने छुआंकु गिफ्टेड एवरेज कि स्लो लर्नर रे माने डिफरेंशिएट करबा नुह ये पिला को कैटेगराइज करबा नुह कैटेगराइजेशन कहा को करूचे कोर्स ऑफ लर्निंग रे जो कोर्स अछि ताको यूनिट 1 करूचे यूनिट 1 रे सही सरी गला यूनिट 1 रे एटा अछि यूनिट 2 रे एटा अछि यूनिट 3 रे एटा अछि एटा ला कैटेगराइजेशन ऑर्गेनाइज करबा पुनी कैटेगरी 1 रे रहिला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ता भितरे यूनिट 1 रे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भितरे कोन कोन रहिबो एडोलेसेंस चाइल्डहुड हां इन्फेंसी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ओके तो ये हला ऑर्गेनाइजेशन बा कोन सब स्टडी मटेरियल्स रही छी ये सब हला conceptualization is related to the process of teaching learning but decontextualization काहे केला एबे जदी बुझी पारलनी पिटी पकेबी आउ गोटे जिंस हला तमे मने करो बुझी भी न पारो मने करो एटा डायरेक्ट परीक्षा रे बसछ तमे परीक्षा रे बसछ मु नाही सेठी बुझेबा पई कि केही नांती तुमको बुझेबा पई तुमको आंसर करिवार अछि और तमे क्वेश्चन केबे देखिनो तापरे भी डिकंटेक्चुअलाइजेशन ही हबो एटा माइंड कहूची ना कहूनी और जदि कहूची कैटेगराइजेशन ताले भूल कहूची पूरा काहे कि ना एतिकी तमरो मुंडो सेतेबेले एटा कोन पेडागोजी टा कोन टीचिंग स्ट्रेटजी टा कोन कोउटा छुआ को भलो बुझी परिबो छुआ केमिति पढिबो छुआ तमे मास्टर बोली भाबी दलो तमे निजे को छुआ बोली भी भाबी दे पारिबो मु छुआ जदि ताहले कोन हेले मु बुझी जीबी को जिंसटा दरकार टीचिंग लर्निंग रे कोन इंपोर्टेंट एजुकेशन पई कोन इंपोर्टेंट बेटर लर्निंग पई कोन इंपोर्टेंट बेटर आउटकम पई कोन इंपोर्टेंट ए जिंसटा दिमाग कहि पारिले पेडागोजी रे जीरो रु केते बेले हीरो हिजबो जणा पड़िबनी
Which of the following is example of internal attribution for failure? ଆଉ ଏଇଟା 1500 ସିରିଜ ଚାଲିଛି ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ଯାହା ଆସିବ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିବ ହଁ କିଛି ମେମୋରି ବେସ୍ଡ କିଛି ଆନାଲିଟିକାଲ କିଛି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋମିଂ ଆଉ କିଛି ଭୟଙ୍କର so which of the following is an example of internal attribution of for failure ଲକ୍ କରିଦେବା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଅପସନ୍ B କୁ I received a low grade because the teacher is a top grader. I failed the test because I did not study enough. I did not get a good mark because the teacher was biased. I failed test because my friend ମୋ friend को दोष देली ମୋ teacher को दोष देली ମୋ teacher को दोष देली किंतु एठी दोष काहाकू दियागला I did not study enough. The internal attribution कोटा आला should be जोटा अलगा तमे इंटरनल एट्रिब्यूशन शुणिदेला परे अरे बापरे कोनटा क्वेश्चन पळे आछि हबनी 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 मुंडरे पसिगला इंटरनल एट्रिब्यूशन मु केबे कर नथली क्वेश्चन मु केबे देखिनि इंटरनल एट्रिब्यूशन एमतिया वर्ड मु सुनि नथली एबे किंतु ऑप्शन देखिला हळको हेगला काहे कि तीनटा को एलिमिनेट करलो भाग गोटे अलगा अछि यस यू आर द आंसर 1 to 9 which of the following is a typical characteristic of student having autism spectrum disorder देखो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एटा उठे डिसऑर्डर माने एठी सुपीरियर जिंस हबनी कि एडवांस्ड जिंस हबनी कि हायर लेवल हबनी एठी रिपीटेशन एंड रिक्यूरिंग बिहेवियर बारंबार सेमती सेमती करथुवा जहा भूल करछि सेटा को सेमती ही करथुवा रिपीट करथुवा रिपीटेडली भूल करथुवा रिपीटेडली रॉन्ग एक्शंस थिवो ओके ये होची आंसर देखो एठी भी सेही जिंस तुम यूज करि परलो फ्रेंड्स ए काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जदि निजर मंगल चाहूच जदि जल्दी जल्दी सक्सेस आड़े जीवा को चाहूच जल्दी जल्दी जो परीक्षाटा सक्सेस तो नो जो परीक्षाटा क्वालिफाई करबा को चाहूच सेतरे जदि पेडागोजी रे एक्सपर्ट होबार अछि एटलीस्ट जदि पेडागोजी रे भी एक्सपर्ट होबार अछि ताले लेट करके जॉइन करनी ठीक टाइम रे जॉइन करो एंड क्लास को जदि तुम इंपोर्टेंस दबो तुमको इंपोर्टेंस मिलिबो सब क्षेत्र रे मिलिबो तुम मन को गोटे काइंड रिक्वेस्ट जो मैंने एक्चुअली चाहूछ एटलीस्ट पेडागोजी क्लास गुडा तो एबे होउची आगो को चाहा भी क्लासेस हो गोटे क्लास जने केते माने व्यस्तता भीतर टाइम बाहर करके तुम मन पय करूछंती ओके जैसे जे भी हो जे कोनसे जदि तुमको एक्चुअली लागु जदि फील होउची जे द क्लास शुड नॉट बी मिस्ड दैट इट इज अ काइंड रिक्वेस्ट टू नॉट मिस एनी क्लास बिकॉज़ मो बहुत कष्ट रे टाइम बाहर करछि तुमको पय बहुत कष्ट रे बाहर करछि एंड यू आर दैट मच इंपोर्टेंट फॉर मी सेति पय बाहर करछि अदरवाइज किछि फरक पड़ंतन हां तो जते बेले बाहर करी परछि टाइम सेते बेले एटलीस्ट तुम माने जॉइन करबा को ट्राई रिक्वेस्ट करछि समझे read the following statement and choose the correct option एठी भी रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन भाभी करिवो To facilitate critical thinking among learners, teachers should expose them to diverse situations and differing perspectives.
Students learn and reach their abilities to think critically and creatively as they engage in conversation across differences. ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହିଁ ହବ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା। A and R are true and R is the correct explanation of A. नहीं? बढ़िया, थैंक यू। एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होची टाइम बाहर करियो and because you are so much important I am getting time कुआडू ना कुआडू टाइम पळे आछी। हां तो एटलीस्ट जेतेबेले हाई स्कूल रे टीचर थिला बेले एटलीस्ट फ्री टाइम टिके सफिशिएंट मिले बट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हला परे तार माने जो रिस्पांसिबिलिटी जो काम करबा जो जते टारगेट जहाँ भी काम रहउची इट इज अ 24 आवर जॉब। हां 24 घंटे तो जेतेबेले दरकार हुए हमको टाइम दबा को पड़े at any moment sange sang sudden plans हुए। 131 the primary goal of learning should be लर्निंग रे प्राइमरी गोल कौन हवा दरकार मुख्य उद्देश्य मेमोराइजेशन तो नुह एक्सीलेंट एट रोट रिहर्सल रोट आसला तो पुणी मेमोराइजेशन आसला कंपीटिंग विथ पियर्स डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एटी कंपीट करवाटा ठीक नुह कंपीट रे मु रंग मार देली तो राइट टा कोटा कंपीट टा काई के हेल्दी कंपटीशन बोली जो लिखा हिता गोटे टाइप ऑफ पॉजिटिव हिता डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इज कंप्लीटली पॉजिटिव एंड प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी क्रिटिकल थिंकिंग रो डेवलपमेंट हम निजे एनालिसिस करि परिबा दरकार तो लर्निंग एटलिस्ट एतिके ही जाई थाउ तापरे पछे कथा अलगा जे जानी परिबा दरकार कोटा ठीक कोटा भूल कोन करिबा दरकार कोन न करिबा कथा ये हला क्रिटिकल थिंकिंग ये होची डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। देखो क्रिटिकल थिंकिंग कोन क्वेश्चन करिबा होची क्रिटिकल थिंकिंग क्लारिफाई हबाटा होची क्रिटिकल थिंकिंग आइडेंटिफाई करिवाटा क्रिटिकल थिंकिंग एनालाइज करिवाटा होची क्रिटिकल थिंकिंग इवालुएट करिवा क्रिएट करिवा ए सब क्रिटिकल थिंकिंग भितरे जाउछ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भितरे आमे ए सब जिंस को नहीं परिबा। डन अच्छा चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ ए concept proceeds from 130 रे किछि नाही बुझला भलिया मेमोराइजेशन प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी मुख्य लक्ष्य कौन हवा दरकार मौलिक लक्ष्य कौन हवा दरकार लर्निंग रो मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट माने घोषिकी मने रखिबा टा प्राइमरी गोल एक्सीलेंट एट रोट रिहर्सल पुणी मेमोराइजेशन रोट माने होची मेमोराइज करिबा तो मेमोराइज करिबा और रिहर्सल करिबा होची एक्स यार एम नुहे कंपीटिंग विथ पियर्स पियर्स वा फ्रेंड्स मान को सहित कंपीट करिबा भी नुहे डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इट इज निहाती दरकार फॉर बेटर डेवलपमेंट बेटर लर्निंग ओके बुझवा को चेष्टा करो धीरे धीरे बुझी जीवो गोटे क्लास रे बुझी जीवो बोली केबे भाबनी कि एक्सपेक्ट करनी कि निजको सुपीरियर बोली भाबनी पूरा जीरो रे थिले भी ए क्लास जदी करूचो ताले ग्रेजुअल डेवलपमेंट हे जीवो जानि पारिबोनी केते बेला एक्सप्लोरिंग गोल्स रे क्लास करू करू पेडागोजी लव हे जीवो मैजिक हे जीवो खाली जस्ट स्टिक टू इट जनरल टू स्पेसिफिक जीवार अछि जेनेरिक टू स्पेसिफिक abstract to concrete नो concrete रो abstract हेतिले करेक्ट हेतंदा complex रो simple नो simple रो complex हेतिले करेक्ट हेतंदा rational to empirical नो ओके so the right answer is general to specific ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ GIS ନା SIG specific to general ହବା କଥା ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ହବ जनरल टू स्पेसिफिक कहीं हो स्पेसिफिक टू जनरल कहीं हो GIS इंडक्टिव टा हो इंडक्टिव मेथड टा सब बेस्ट मेथड जनरल रु स्पेसिफिक जाओ GDS सॉरी जनरल टू SIG
एंड जीडीएस भितर कोटा मोर अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक रु जनरल को जिबा ना जनरल रु स्पेसिफिक को आसीबा अच्छा एटा मु बुझे दोछि कोन एटा छाडी दियो एटा मु भूल कर देछि जीडीएस और एसआईटी स्पेसिफिक टू जनरल को गले इंडक्टिव जनरल टू स्पेसिफिक गले डिडक्टिव ओके क्लियर दैट इज जनरल टू स्पेसिफिक गले लाभ कोन जनरल माने कोन रूल रूल रु एग्जांपल और तार ऑपोजिट टा जोटा एटा होछि डिडक्टिव जनरल माने सबुठी अप्लाई करि हो स्पेसिफिक माने एग्जांपल जेते बेले हमें रूल गोटे कहूचे एठी इफेक्टिवनेस कहूची इफेक्टिवली चाइल्ड लर्न करि पारे केते बेले एसआईजी बेस्ट मु मना करनी देखो एठी एसआईजी नाही और बाकी सब भी भूल अछि तो एठी काहे कि एटा होची देखो एग्जांपल रु रूल को जाई पारो गुड वन स्पेसिफिक रु जनरल हे परिबो जनरल रु स्पेसिफिक भी हे परिबो बट देखो एग्जांपल रु रूल को जते बेले जाउछो सेटा बुक रे जदि देखिबा आगर रूल थिबो ए नियम नियम को जते बेले हम एग्जांपल दे दवा सहज होई जिवो होय ना नै जे कोनसे नियम टे आसला मनकर पाठ पढौचे क्लास रो गोटे बहिटे उल्टेइले सेठी गोटे नियम लिखा जाइछि से नियम सहित को जगह रे अप्लाई हो कि गोटे एग्जांपल दे देले मजा आसिबो ना नै एबे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होउछि एग्जांपल नै कि हीराकुद रे पहुंचैली टरबाइन केमति बुलउछि एग्जांपल दिया हला हीराकुद डैम रे क्लियरली बुझि पारलो दैट इज व्हाई एठी एप्लीकेबल एठी अप्रोप्रिएट आंसर इज ए variability in learning styles of students variability in learning styles of students students मानको भितरे लर्निंग स्टाइल रो फरक देखा जाए जहा को कि should be valued and seen as a reflection of human diversity should be ignored and not attempts should be made to bring uniformity learning style रे uniformity केबे आसी परिबोनी तेनो इग्नोर कले भी किछि लाभ मिलिबोनी काहे कि डाइवर्सिटी अछि तो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल भी हबो should not be taken into consideration during teaching learning process must नवा दरकार teaching learning process रे should be seen as barrier and hindrance जे बाधा सृष्टि करूची teaching learning process रे बोली भाबिबाटा पूरा भूल so should be valued and reflection of human diversity जेहेतु मनीष दुनिया रो समाज रे डाइवर्सिटी अछि तेनु जेहेतु समाज रे आसुचंती स्टूडेंट्स माने डिफरेंट हेरिडिटी डिफरेंट एनवायरनमेंट रो त डिफरेंट लर्निंग स्टाइल रहिबो वेरिएबिलिटी देखा जीवो ही जब तेनु लर्निंग स्टाइल अलगा हबो ही हबो तेनु याकू वैल्यूड बा इंपोर्टेंस दबा निहाती दरकार काहे कि ना ये ह्यूमन डाइवर्सिटी रो रिफ्लेक्शन which of the following questions promote critical and creative thinking in children हरी हरी शुणा तुम किसी असुविधा नहीं आराम से सब जिन मिल जाव मत व्हाट्सएप कर दबो डिटेल्स कहीदेवी पिला माननकु आगर डिफरेंट वेराइटीज रो वेजिटेबल्स विषय रे कहा जाए देन स्पेसिफिक करा जाए काहाकू क्रीपर कहंती काहाकू कहंती नहीं अच्छा अच्छा हाँ एग्जैक्टली प्लांट्स डिफरेंट टाइप रो अछंती एटा जो एग्जांपल दउछंती से जनरल टू स्पेसिफिक रो
प्लांट्स डिफरेंट टाइप रो अछंती बहुत लेट रे देखली कमेंट टा प्लांट्स डिफरेंट टाइप रो अछंती कोन कोन हां के ट्री के shrub के हर्ब तो हमें जनरल आगो कहीदेले प्लांट्स तापर स्पेसिफिक को गले ट्री shrub हर्ब तापर पुणी स्पेसिफिक को जीवा ट्री रो एग्जांपल shrub रो एग्जांपल हर्ब रो एग्जांपल राइट दैट इज व्हाई जनरल टू specific is the answer. Which of the following questions promote critical and creative thinking in children? देखिए पड़ला तुम सब कथा हलो जतबेले हां थैंक्स दिया दे हेलो से मते टिके देखिए पड़ला बड़ बड़ लोक माने तुम सब छोटकाटिया जीवो कि which of the following questions promote critical and creative thinking तो यार राइट आंसर होची yes how many states and how many capitals are there in your country एठी तो घोषी देलो हां मेमोराइज करिचो कहि देलो एठी क्वाडू क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग आसिला हबो कि हबन अच्छा where does water comes from in your city तम सेटर पानी कोड आसे हमर महानदी एठी कोन महानदी रे कोन हला memory based which can be the best way to save water and why एठी आसिला अच्छा what is the name of your country geographical location on the map अच्छा छाड़ दियो तेनो वेज कहबो बेस्ट वेज कहबार अछि क्रिटिकल थिंकिंग आसीबो क्रिएटिव थिंकिंग आसीबो केमिति हमें सेव करि परिबा वाटर एंड काई की करियो ओके what is the role of evidence in critical thinking हां प्रियंका इंडक्टिव मेथड बेस्ट ठीक अछि जोटा जोटी अप्लाई करियो सेटा सेटी बेस्ट हां डियर ओएस जे ओएस से हमु कोन पचारियो रे डियर ओएस हां एबे तमे ओएस तमरो ओएस खोजुथिलो बाहा हो बोली एबे ओएस निजे होचो पुनी काहा को खोजबो कलेक्टर आईएएस 135 evidence should be evaluated in a logical and systematic way evidence should be accepted without analysis evidence it should be accepted without analysis तो हबनी irrelevant to critical thinking एमदी no evidence should be ignored अरे the evidence should be evaluated in logical and systematic way ही right answer बाकी सब लागुनी एबे कोन होची जे एक्चुअली जोटा डियर ओएस हमर जो कहले जे मु ओएस को मैरिज करिवि बोली आको कहले एबे निजे ओएस हवा ପାଇଁ चेष्टा करछंती ओएस हे गला परे कहबे जे मु आईएएस को बा हेबी किंतु एक्चुअली सेते बेले चेंज हे जिवो कहबे मु निजे आईएएस हेबी तो दैट इज द सेंति हवार अछि अरे निजे जहा सेटा निजे सीए कोन से तो तुमको कोन मिलियो व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन इंटेल what does inclusive education entail inclusive education कौन कहूची standard curriculum for all learners अच्छा segregation and categorization of students एटा तो चांस नहीं provisioning only vocational education देखो only मु सबले कहछि नेगेटिव vocational education to learner with special needs तो केवल vocational education दबो ए दुईटा छक पके देला नहीं एबे देखो flexibility in the curriculum as a result of recognition of individual difference तो एटा मजा लागिला ना एटा मजा लागुतला एटा मजा लागिला तो मजा जोठी आंसर सेठी आणि तमे जोठी मजा सेठी ତେଣୁ ତମେ ଯୋଉଠି ମଜା ସେଇଠି ଆଉ ମଜା ଯୋଉଠି ଆନ୍ସର ସେଇଠି ମାନେ ତମେ ଯୋଉଠି ଆନ୍ସର ସେଇଠି ହେଲା ହେଲା ସେତିକି ତ କରିଦେଲେ ଗଲା ଆଉ ହଁ ତାପରେ ଦେଖିବା କିଏ ନବ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡାକ କିଏ ନବ ସିଟ୍ ଗୁଡାକ କିଏ ନବ ହଁ ଯାହା ପିଠିରେ ଗଧିଆ ବିଧା ପଡିଥିବ ସିଏ ହିଁ ନବ ଯିଏ ଏଠି ଆସିକି ନିଆଁ ଜାଳିଥିବ ସିଏ ହିଁ ନବ ତ ଯୋଉମାନେ ନିଆଁ ଜାଳିନ ଟିକେ ଭାବିବାର ଅଛି ଜାଳିବ ନା ଜାଳିବନି ହଁ ଚलो ମୁଁ ଜାଳିଦିଏ ରେ ନହେଲେ ମୁଁ
आहा प्रखर 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 अग्नि प्रज्वलित कर दियो समस्ते जाली दियो सब हाँ चलो आगको बढ़िया जाली देकी 137 which of the following set correctly mentions the characteristics on which students who are gifted typically differ from other students in the class very good पूरा अग्निकांड कर देला पूरा लंका कांड हो गला देखो କହିଛି set correctly mention the characteristic on which students who are gifted typically differ from other students gifted students ର characteristics କଣ ପଚାରିଛି advanced depth of understanding ଠିକ ଅଛି fast pace of learning ଠିକ ଅଛି higher dependence on others for understanding depend ଅଧିକା କରିବ ବୋଲି କହୁଛି ନାହିଁ rapid physical development ଟା rapid ବି ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ଏବେ ଅପସନ ଦେଖିବା A B D ଅଛି କି ନାହିଁ ତ ଏ ବି କୋଉଠି ଅଛି ଡି ରେ ମାରିଲ ଖତମ ମାର୍କ ନେଇକି ଘରକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ନେଲା ବେଳକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ବେଳକୁ ଦିଥର ଆସିବାର ଅଛି ବାସ୍ ତାପରେ ଖତମ which of the following statements is correct in the context of ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଡାକି ପାରନ୍ତି hearing impairment following statements is correct in the context of hearing impairment ସେ ବିଚରା ନା ଚେଞ୍ଜ କରି କରି କେତେ ନା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା କିନ୍ତୁ କାଙ୍ଗାଳିଟା ଗଲାନି ରେ ନାଇଁ ହଉ ସେ କାଙ୍ଗାଳି କାଙ୍ଗାଳି ହେଇକି ରହୁ ଆଉ ସେଇ ପୋଷ୍ଟର କାଙ୍ଗାଳି ହଉ ନଲେଜର କାଙ୍ଗାଳି ହଉ ହଁ ସମସ୍ତେ ହବା ଦରକାର 138 which of the following statements is correct in the context of hearing impairment can affect a child's ability to communicate effectively yes hearing jogu communication affect habo na nahi habo all children with hearing impairment need to use sign language to communicate acha hearing impairment माने नुह जे କହିପାରୁନି ସବୁବେଳେ ସେମିତି ନୁହଁ ତ ଅଲ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଇ କେସରେ ହବନି hearing impairment of child can be reliably tested by making loud noises near the child अच्छा ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଲାଉଡ ନଏଜ କରିକି କରିବ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଡଭାନ୍ସ କରିଗଲେଣି ହବନି ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ଇଜ always due to physical problem with the ear ନାଇଁ internal problem କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ବି ଥାଇପାରେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ବି ଥାଇପାରେ ସो ଏଠି ମୋର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଏ ହବ ହଁ ବିରିୟାନୀ कंगाली से ना रोजा आहा ହେଇଯିବ ତ ତ ଏ କରେକ୍ଟ can affect a child's ability can affect always ବୋଲି କହିନି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହିୟରିଂ ଇମ୍ପାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରଭାବିତ ହବ ନା ନାହିଁ ତ 100% ଯୋଉଟାରେ ସିଓର ତା ସହିତ ନ ଯାଇକି ଅଲଗା ଅପସନ କାହିଁକି ଦେଖିବା ହୁଁ ନିହାର ବେଳା କଣ ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢୁଛ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛ କଣ କରୁଛ ସବୁ କରିସାରିକି ପୁଣି କ୍ଲାସରେ ଜଏନ କରିଦଉଛ ନା ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ହେଲ ଆଉ କଣଟା ହବ ପୁଣି କଣ ହବାର ଅଛି ରେ ସବୁ ଲାଗି ପଡ ସବୁ ଯିଏ ଯାହାର ହବାର ଅଛି ମିଶିକି କରିବା କିଛି ଗୋଟେ जेटीएस केस न्यूज कौन न्यूज टीवी वाला कहबे ଆଉ चलो in the context of inclusion curriculum learning expectations are the same in dash while in dash they are different देखो देखो दीटा dash ଅଛି in the context of inclusion curriculum learning expectations are the same in dash while in dash they are different inclusion କଥା କହିଛି curriculum learning expectation are the same in
OES ହବାର ଅଛି କି ହେଇଯିବ ଆଉ। ମୋ ପୋଷ୍ଟଟା ନେବେ କହୁଛନ୍ତି। ନିହାର ଦିଦି ମୋ ପୋଷ୍ଟଟା ନେଇଯିବ ଯଦି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲା। 139 देखो curriculum देखो in the context of inclusion curriculum learning expectation are the same in curriculum learning expectation टा आम inclusive context रे भी same आम पाइबा को चेष्टा करिबा same in accommodation while in modification they are different माने learning expectation टा same in accommodation रहिबो but different in modification रहिबो। एते समस्त निहार दीदी कहउछ तो मु आ कोन कुआर आसली ହେଇଥିବେ दीदी अब एबे भी टीचर हे गलनी तो दीदी ही दुनिया रो दीदी आ मु के accommodation modification is the right answer so D is correct which of the following is an example of intrinsic motivation କିଛି ନୋଟ କରନି ମିସ୍ करते खाली एंजॉय करो which of the following is an example of intrinsic motivation ର example कोड completing the project to impress the teacher अरे मुश्किल playing a music instrument for personal enjoyment intrinsic motivation एटा हे पारे studying to avoid being scolded गाली सुनिबिनी बोली पढ़िबा मुश्किल participating in a competition for a prize money ना तो intrinsically motivate हबा पाई हेले एटा दरकार कोटा पर्सनल एन्जॉयमेंट दरकार हैला अलगा अछि जानि गलो करो आज क्वेश्चन टिके अछि जेहेतु एनालिटिकल तो टाइम अधिका निश्चय जीवो क्लास रे जदि चाहूछ जे जदि बोर फील करछु देन यू कैन मैसेज मी सो दैट आई विल गो in a better speed with Lamborghini. What is the difference between mastery goals and performance goals? दुटा भीतर डिफरेंस कोन देखो तुम माने जो भाबुछ जे एउडा एमसीक्यू सेशन सेटा थ्योरी सेशन तो थ्योरी नुह एमसीक्यू नुह सेमती एमसीक्यू रे थ्योरी अछि एंड थ्योरी रे भी एमसीक्यू अछि mastery goals are focused on avoiding failure while performance goals are focused on gaining approval and recognition from others. Mastery goals are focused on improving one's own skills and understanding of a task, while performance goals are focused on achieving a high grade or receiving external rewards. Mastery goals are focused on gaining approval from others. देखो other approval mastery goals रे हबनी mastery goals माने master हबो फेल्युअर को अवॉइड करबाटा मास्टरी नु मास्टरी माने पूरा हायर लेवल पर्यंत जीव सेल्फ सैटिस्फैक्शन फील करिवो निजको बुझिवो निजर क्वालिटीज को चिन्हबो एंड एक्सप्लोर करिवो मास्टर गोल आर फोकस ऑन अचीविंग ए सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कंपीटिंग विथ अदर्स एठी कमी कर देला कंपीटिंग विथ अदर्स हमर टारगेट नु हमर से लेवल को पहुंची जिबार अछि बस while performance goal focused on improving one's own skill and understanding of a task एटा उल्टा कर देला ओन स्किल और अंडरस्टैंडिंग को जानिबाटा फोकस करिबाटा परफॉर्मेंस गोल जोटा कि अछि ऑप्शन बी रे फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग वन्स ओन स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क परफॉर्मेंस गोल्स होची हायर ग्रेड रिसीव करिबा बा एक्सटर्नल रिवार्ड पाइबा होची परफॉर्म करिबा परफॉर्मेंस गोल एटा मास्टरी गोल एटा निजको जानिबा निजको इंपोर्टेंस दबा निजर हाईएस्ट पर्यंत जिबा निजको बुझिबा निजर स्किल को इंप्रूव करिबा ये होची मास्टरी तो बी होची राइट आंसर जो माने करिचो बहुत बढ़िया सब कर दो जो एटा कर दो तो बहुत किछि कर दो आगु आ जो माने एटारे भूल हे गला आ एबे बुझेला परे बुझि गला कोन जिंसटा ताहले भी आगु को बहुत किछि कर दो आ जो माने एबे बुझि पारुनो आउ थरे देखिले बुझि जिवो कि चार थर देखिले बुझि जिवो से माने भी आगु को बहुत किछि करि परबो सब yes keep on moving that is the only thing to reach the goal to be satisfied in life students struggling with dyslexia can be taught to read
Dyslexia ଅଛି, learning disability, specific learning disability, reading disability ଅଛି। ହଁ dyslexia ଥିଲେ ଟ୍ୟାବ୍ କୁ କଣ କରନ୍ତି? ବ୍ୟାଟ୍ କହନ୍ତି। ରାଇଟ୍। W କୁ M ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆଜି ରାତି 10ଟାରେ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ RI, ARI, अमीन, सुपरवाइजर एसबू पोस्ट गुड़ा जो बाहरी ओ ट्रिपल एससी रे केमती रही सिलेबस आउ केमती पढ़ले आम गोटे जॉब जमती भी दरकार अच्छी जो मानकर अचीव करिवार अच्छी जहाँ भी हो गोटे लेवल रे पहुंचवार अच्छी गोटे कॉन्फिडेंस गेन करिवार अच्छी यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट और तापाई कौन रहबो स्ट्रेटजी आई विल शेयर एठी जो माने करिदलो हां प्राय तो कर देचो फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग दवा जेहेतु कोच रे प्रॉब्लम होची रीडिंग रे नहीं कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट तो केबे भी होबनी प्रोवाइड हायर ग्रेड अरे तार तो बेसिक क्लियर हे पाउनी कहि पाउनी प्रॉब्लम होची पढ़ी पाउनी by encouraging them to study in multiple distractions अरे गोटे डिस्ट्रैक्शन नॉर्मल सिचुएशन काम सिचुएशन रे पढ़ी पाउनी डिस्ट्रैक्शन सुधी बढ़ाई दवा से आ किछि करि परियोनी राइट यस लिप्सा सिस्टमैटिक phonics phonics based instruction दवा very good the underlying principle of understanding based teaching is the belief that यस सर जॉब दरकार झियो मिलिबो हां सेटा भी गोटे भलो मोटिवेशन बट भलो जॉब हेले आहुरी भलो झियो मिलिबो सेटा भी गोटे भलो आहुरी भलो मोटिवेशन जदि जॉब दरकार झियो मिलिबो माने झियो एठी स्पेसिफाई करा जाय जे को टाइप रो झियो जदि जॉब दरकार झियो मिलिबा पई ताले भलो झियो दरकार ना दरकार नहीं हां बस एबे भलो जॉब भी सही से करिवार अछि अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग is the belief that learners can construct knowledge when provided with a facilitative environment to do so. Okay. ଦେଖୁଛ ଆମର ଏଠି ଝିଅମାନେ OES, OAS, IAS ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଲେଣି ତମର ସେମିତିଆ ଝିଅ ଦରକାର ନା ନାଇଁ ଯଦି ଦରକାର ତାହେଲେ ତମକୁ ବି ହବାର ଅଛି IAS, IPS ହଁ learners can construct knowledge when provided with a facilitative environment to do so କାହିଁକି understanding based learning ଏଠି ଅଛି तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग माने फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट दरकार लर्नर्स आर पैसिव रिसिपिएंट केबे भी नो सब बड़े एक्टिव एक्सप्लोरर लर्नर्स एबिलिटीज एंड नीड्स आर डाइवर्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड टू focus on standard instruction cannot be negative words learners know little and teaching involves transmission of facts to students learners know little कौन जानी छंती बोली कहि दले it is a statement against the learners एमतिया भी हबनी the right answer will be कौन एटार C 143 C correct how can teacher help Aman who is struggling with complex problems develop problem solving skills जार complex problems अच्छी जार ना होची अमन ताकू केमिति टीचर हेल्प करी परिबे टू डेवलप problem solving skills encourage him to brainstorm and generate ideas right or not ठीक encourage him to brainstorm and generate ideas conducive classroom environment for learning is in middle classes centers around
मिडिल क्लासेस माने एटी मिडिल क्लास रो लोक मान को कथा कुआ जायनी छुआ मान को कथा कुआ जाय छै मिडिल क्लासेस माने अपर प्राइमरी लेवल रे तुम माने कहि परिबो 5 रु 8 क्लास बा 6 रु 8 क्लास ए टाइम रे conducive classroom environment for learning in middle classes centers around एटी सबटु बढ़िया जिनसटा अछि जोटा कोऑपरेटिव लर्निंग याटु भलो जिनस आ किछि न conducive classroom environment तो flexible fertile पूरा flexible fertile रहियो suitable रहियो तो cooperative learning better प्रियंका देखली तुम्हारा कमेंट अच्छा assumption reason as a time taking session the most important and very analytical questions are there analysis करके आंसर दियो ब्रेनस्टॉर्मिंग माने जोटा मुंड भितर छड़ आनिबो चिंता करबा को बाध्य करिवो चिंता शक्ति को जागृत करिवो जो सोई पड़िछि ब्रेन ताको उठै दो शीत दिनिया सोई पड़िछि तो पानी टिके छिंची होता मुहरे ओके एनालिसिस करबा क्रिएटिविटी आनिबा क्रिएटिव थिंकिंग आनिबा ए सब ब्रेनस्टॉर्मिंग रो पार्ट Teachers should ask students to identify their own examples and non-examples of the concept for strengthening the concept. Yes. निजे गोटे कनसेप्ट को बुझवा पाई से कनसेप्ट रो एग्जांपल कोटा हबो एग्जांपल नुह कोटा से जिंस सहित रिलेटेड एग्जांपल कोटा अच्छा कहलो पिले तुलसी गछ ट्री रे जीवन हर्ब रे जीवन सर्ब रे जीवन मन कर फरक करिवार अछि बहुत गुडे गछ दे देछि हां कलरा गछ आंब गछ आउ कोन सेटा तुलसी गछ एमती सब लिखा है भितर डिफरेंशिएट कर एग्जांपल कोटा नॉन एग्जांपल कोटा या द्वारा स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कांसेप्ट हबो ना नहीं हबो दैट ठीक अछि थिंकिंग ऑफ एग्जांपल्स लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कांसेप्ट व्हाइल नॉन एग्जांपल्स टेंड टू कंफ्यूज द स्टूडेंट समथि नहीं एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स दीटा जक इंपोर्टेंट नॉन एग्जांपल्स बाचिले भी स्ट्रेंथनिंग हबो और एग्जांपल्स बाचिले भी स्ट्रेंथनिंग हबो हना नहीं तो जोटा गछ नुह सेटा को भी जानिबा द्वारा भी स्ट्रेंथनिंग हबो कांसेप्ट और जोटा गछ सेटा जानिबा द्वारा भी हबो राइट कोटा श्रब कोटा हर्ब सेटा भी डिफरेंशिएट करि परिबा ता द्वारा तेनु ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स बुझी पारलो ए काई के लगी एटा बहुत इंपोर्टेंट टिके एनालिसिस करिवो आउ थरे ए पार्ट को देखि नबो जदि बुझी न पारलो general principles of learning suggest that student learn better if a टीचर कौन हेले स्टूडेंट भलो से लर्न करि परिबे both answers same अछि कोठी both a and r are false अछि ना एठी बट एटा गोटे ही तो अछि अच्छा एठी दीटा नहीं एठी भी डिफरेंट अछि यस टीचर कौन कले स्टूडेंट बेटर लर्न करि परिबे फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड देन मूव टू its physical form अच्छा general principle of learning which first discuss what is not known to the student and then come to what is known एटा तो केबे भी नो कहीं कि known to unknown जिबा unknown to known नो first introduces the concept overall and then move on to the अच्छा first discuss the concept in terms of logic and reason and then grant opportunity to verify the idea एटा बेटर अछि तो डी होबो राइट आंसर कहीं कि प्रथमे concept in terms of logic and reason दे दबा तापरे opportunity to verify the idea तापरे verify करिवे जे actually discuss जोटा करा जाउछ बा concept जोटा अछि और जो logic और जो reason दिया गला that is appropriate or not
General principle of learning. The D is the right answer. Acha Santosh, thank you. When a teacher leads the child to the correct answer through various prompts rather than mere explanation, the it help provided the help provided is referred to as. Teacher leads the child to the correct answer through various prompts rather than more explanation. Explanation न ଦେଇକି various prompts ମାନେ examples ଦଉଛନ୍ତି. Explain ନ କରିକି example ଦଉଛନ୍ତି. ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ହେଲ୍ପଟାକୁ କଣ କହିବ? ତ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ହେଲ୍ପ ଆସିଲା ମାନେ ବା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସପୋର୍ଟକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କଲା. ଟେମ୍ପୋରାରୀ ସପୋର୍ଟକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ କଲା. ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିକେଟ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଇଏ ହଉଛି ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ଯୋଉଟା ଲେଭ୍ ଭାଇଗୋଟ୍ସ୍କି ଦେଇଥିଲେ. Assessment should not be undertaken assessment should not be undertaken ମାନେ negative କୋଉଟା to find out the readiness level of children ଭଲ କଥା to reflect upon and modify teaching learning ଭଲ କଥା to induce fear and stress of learning among children induce କରୁଛେ introduce କରୁଛେ ବା fear ଆଣୁଛେ ବା stress ଆଣୁଛେ ଏଟା ତ ହବନି to support and improve children's learning ଠିକ ଅଛି ତ not be undertaken ତ answer C ହିଁ ହବ no doubt ବହୁତ ବଢିଆ ଏବେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପୁଣି କରିବାକୁ ମତେ ପଡୁଛି ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ ବି ଆସେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଯଦି କରିନ ତାହେଲେ କରିଦବ and କାଇଣ୍ଡଲି କୌଣସି ଗ୍ରୁପରେ ଅଛ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଅଛି କୋଉଠି B.Ed କରୁଛ କୋଉଠି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛ କୋଉଠି କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛ କୋଉଠି ତମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ଅଛି ସେଠି ଭିଡିଓକୁ କାଇଣ୍ଡଲି ସେୟାର କରିଦିଅ so that they can also join and watch 150 During a class test, a teacher finds that most of the students have responded incorrectly. Class test रे teacher देखले जे most students incorrect response ଦେଇଛନ୍ତି to a concept based question. The teacher should. Yes. Thank you for your likes ଯଦି ହେଇଯାଇଛି. During the class test, a teacher finds that most of the students have responded incorrectly to the concept. Teacher कौन करिवे? Should the children and scold the children गाली करिवा. Call the parents and complain करिवा. Make the students write the answer to the question multiple times. ଭଲ ଅଛି. Find out conceptual challenges in the students thinking and teach accordingly. ତ multiple times ଲେଖିବାଟା ହେଲା ଏଇଟା rote learning କୁ promote କଲା ତାଠୁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ better option ଅଛି D option ସହିତ ଆମେ ଯାଇପାରିବା କାହିଁକି ନା find out conceptual challenges in the students କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାକୁ find out କରିବା ବା reason ଜାଣିବା reason କୁ ଜାଣିକି ତାକୁ and teach accordingly ମାନେ remedial teaching ଦବା ବା ନିଜର pedagogy ରେ modification ଆଣିବା ବା teaching skill କୁ change କରିବା teaching skills को अनुଧ୍ୟାନ କରିବା ଆଉ ତାକୁ change ଯଦି ଦରକାର ତାହେଲେ କରିବା କଥା କହୁଛି which is a right and appropriate response to this question individualized education plan हाँ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି exploring goals application କୁ download କରିନ play store ରୁ ସେମାନେ କରିନବ and ଆମର ଯୋଉ course ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ premium batch ରେ join କରିପାରିବ for complete guidance many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up kindly ଏଟାକୁ ବୁଝିବା ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ୱେଟ୍ କର ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ମୋର କହିବା କଥା ଏଇଟା କି ଯୋଉମାନେ 3 ଥର ଫେଲ୍ ହେଲଣି ଯୋଉମାନେ 4 ଥର ଫେଲ୍ ହେଲଣି ଯୋଉମାନେ 5 ଥର ଫେଲ୍ ହେଇଗଲଣି ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ଆଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି ମୁଁ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦେବି ବଟ୍ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଭାବୁଛ ସେତେବେଳେ ତମର ସକ୍ସେସ୍
आउ फेल्युअर या भितर जो गैपटा तमे पाखापाखि 99.9% लोड हो जाइथिबो तापर जदि तमे क्विट करदबो ताहले ता माने जहा ये कोटेशन से या कहूछि मैक्सिमम फेल्युअर रो रीजन होछि जे आमे जानि पारुने जे आमे केते क्लोज अछे सक्सेस रो हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गेव अप तेणु जानिबा दरकार जे 5 थर फेल हेलेनी 5 टाइम्स फेल ए भितरे किंतु तमे एई जगह आ ना हो एटू स्टार्ट करिचो फर्स्ट फेल हला बेले एठी थिलो सेकंड फेल एठी थिलो थर्ड फेल एठी फोर्थ फेल एठी एंड फिफ्थ फेल रे एठी अछि जोटी गोटे स्मॉल एफर्ट रो दरकारी अछि आवश्यकता अछि जोटी फेल्युअर टा सक्सेस रे ओवरनाइट ही चेंज हुए जदियो परिश्रम टा हमको लाइफ लॉन्ग बहुत समय देकी करिया को पड़े बट गोटे सेकेंड रे ही जना पड़ी जाए जे मु परिश्रम करिथिली कि न करिथिली कहीं ना रिजल्ट बाहरिबो और रिजल्ट रोल नंबर खोजिबो आ पाइबो ए जो मुहूर्त ए मुहूर्त गोटे सेकेंड रो समस्त मु भाबुची जे या द्वारा मोटिवेट हबो एंड ट्राई करबो और बेस्ट करबा पई निजर बेस्ट दबा पई बिकॉज़ यू आर ऑन द वे टू सक्सेस एंड बहुत कम आउ सक्सेस आउ तमरो लाइफ रो जो स्ट्रगल ता भीतर कम बहुत कम गैप अछि थैंक यू समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक you for understanding the importance of time and joining. Thank you always. And मैं आज 150 क्वेश्चन सारी देले ता माने we have completed 10% of this session. Congratulations everyone. Thank you. राति 10 रे देखा हवा RI अमीन रो preparatory strategy डिस्कस करिवा. Take care. See you at 10. जय जगन्नाथ.